बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर मिस सदफ और आज है हमारा यूनिट नंबर 9 का पहला लेसन। यानी आज हम एक नई आवाज़ सीखने लगे हैं। तो जल्दी से अपने लिसनिंग ईयर्स को एक्टिव कर लें, बिकॉज इन्होंने ही आपकी हेल्प करनी है आज की साउंड को सोचने में, ढूंढने में, और उसके बाद आपने उसको हमें बोल के भी तो बताना है। तो जल्दी से रेडी हो जाएं डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आज का जो सबक है उसका पेज अपनी किताब के सफ़े से ज़रा मैच करें। और डियर टीचर्स, फॉर द मटेरियल फॉर दिस लेसन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। काइंडली क्लिक इट एंड डाउनलोड इट फॉर योरसेल्फ to make your lesson more exciting and useful for yourself and your students. These lesson plans are suggested activities. Teachers, you can feel free to add more activities, make any changes in any particular activity, but make sure that the expected learning outcomes जो आपके लिए किताब में mention है, किताब के सफ़े में from the curriculum, वो disturb ना हो. If the ELO says name things in the environment, that means they should be able to name a few things in the environment. If the ELO says describe and talk about pictures, give them opportunity to describe and talk about pictures. If this says recognition of phonemes, that means they have to listen well so that they can recognize one sound after within so many sounds. तो जब हम डिफरेंट साउंड्स की रिकग्निशन करवाने के लिए बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उनसे जितना ज़्यादा उनको बोलने की प्रैक्टिस की जाए, जितना ज़्यादा वो तस्वीर को देख के बात करना चाहें, उतना ही उनको सीखने का शौक भी पैदा होता है और साउंड भी रिकग्नाइज हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे तस्वीर देखिए और बताइए ये क्या चीज़ है। कभी आपने देखी आसमान पे उड़ते हुए, या टीवी पे, या किसी भी ऐसी एक्टिविटी को कहीं पे होते हुए देखा? What is this? This is a helicopter. Yes, this is a helicopter. बात करें हैं हम इनिशियल साउंड की, तो जरा पहली जो इसकी बोलते हुए जो पहली आवाज है, जरा उस पर फोकस करें। हेलीकॉप्टर। तो पहली क्या साउंड बनी? ठीक है जी, ह करके साउंड है जो कि आपने हलक से निकालनी है। सो इट्स अ हेलीकॉप्टर। देन व्हाट डू यू सी नाउ? It's a picture of a hut. The initial sound is h, hut. Then what do you see? What is this? It's a hen. hen, जिसको हम उर्दू में मुर्गी कहते हैं, इंग्लिश में इसको hen कहते हैं। कुछ इसको लोग चिकन भी कहते हैं। चिकन is another word, but the actual word is hen. Good. What are these? These are horses. हाँ जी, घोड़ों को इंग्लिश में कहते हैं horse. Horses. और शुरू की आवाज ह। तो डियर टीचर्स, इन साउंड्स की रिकग्निशन के लिए कुछ वोकैबुलरी आपके साथ बुक में भी शेड है, कुछ वोकैबुलरी यहाँ स्लाइड्स पे शेड है। आपके पास भी अगर कोई फ्लैश कार्ड्स हैं या कोई रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो दिखा के उनको बच्चों की इस साउंड के साथ रिकग्निशन को डेवलप कीजिए। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, क्योंकि इस वक्त बच्चे जो है उनके लिसनिंग ईयर्स एक्टिव हो रहे हैं, और जिस साउंड को, जिस वोकैबुलरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो वोकैबुलरी और वो साउंड्स वाले अल्फाज इनको स्टोरी में भी सुनाई देंगे। इसलिए ये अल्फाज, ये वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं, इनकी जो इनिशियल साउंड है, इन पे ज़रा फोकस करके इनको रिवाइज करवा लीजिए, ताकि जब स्टोरी में सुने तो इनको इनकी पहचान हो जाए। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी प्यारे बच्चों, टीचर्स ने आपके साथ जो वोकैबुलरी डिस्कस की है, जिसको आपने जोर से हॉर्स और हाउस और जो भी आपने वर्ड्स टीचर के साथ डिस्कस किए, शुरू की आवाज पे जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब बारी आएगी उस स्टोरी की जो कि दी गई है आपकी किताब पे। तो व्हाइल आई एम रीडिंग इट फ्रॉम द स्टोरी, आपने अपनी किताब पे जो दी गई तस्वीर है उसको गौर से देखते जाना है, या स्क्रीन पे जो दी गई तस्वीर है उसको गौर से ऑब्जर्व करते जाना है, और फिर आपने बताना है कि जो अभी वर्ड्स आपने कुछ सीखे, क्या वो स्टोरी में आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं। The teachers, one ELO says describe and talk about pictures. So first of all, they need to look at a picture and then talk about it. So we're going to give them some words to identify. So let's start with the story. Haris lived in a village. His grandfather had a huge farmhouse and a big stable. Haris helped his grandfather every day in the evening after completing his homework. He loved to clean and feed the horses.
He also helped the hen section to collect the eggs. There were many tools for the grandfather to work with. The most heavy tool was the huge hammer. Grandfather used to hit and shape hot iron to make horseshoes. During summer, grandfather and Horace worked together to build a small hut for Horace. There was a small pond close to the horse stable. Each morning, Horace would ride his favorite horse and fly his toy helicopter on the farm. Horace loved animals and helping his grandfather. He wants to be a farmer when he grows up. So dear teachers, ये जो story अभी बच्चों ने सुनी, it is given in the book. Now this picture is here right in front of you on the screen. Pause this video, read the story multiple times and each time my dear student, आप आज की vocabulary के words सुने तो आपने finger रख के बताना है कि I can see a hammer, I can see a hat, I can see the hen, I can see the hut and so on. So there are so many things in this picture you need to focus. Teachers इस वीडियो को पॉज करके बच्चों को multiple times ये story सुनाए और इनकी correct pronunciation पे focus रखें. जी प्यारे बच्चों, स्टोरी सुनी आपने, वोकैबुलरी वर्ड्स बोले आपने, सीखे आपने, आज आपके नॉलेज में कुछ नए वर्ड्स का इजाफा हुआ, शाबाश. तो ज़रा मेरे साथ जल्दी जल्दी से कुछ वर्ड्स हैं, कुछ तस्वीर हैं जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, इनको रिवाइज कर लें. टीचर्स, द वर्ड्स आर फॉर यू बट द पिक्चर्स आर फॉर द स्टूडेंट्स सो दैट दे नो. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ horse and a horse likes to eat hay. This is the picture of a hut. There was also something about the hammer in the story. This is the helicopter. This is the picture of a house and this is a hen. So teachers, आज के इस लेसन के बाद बच्चों के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो वर्ड्स आगे उनकी वोकैबुलरी में ऐड हो गए. अब आप क्या करेंगी, बच्चों को कहेंगी कि वो लाइब्रेरी कॉर्नर में जाएं, वहां से कुछ फ्लैश कार्ड्स ले आएं और उनकी मदद से इन ऑब्जेक्ट्स को दोबारा रिपीट करके इनके नाम बताएं. सजेस्टेड होमवर्क के लिए आपको एक वर्कशीट दी गई है जिसमें पिक्चर बनी हुई है एक हट की. डियर टीचर्स, इफ यू कैन टेक इट down from the net, you can use it. Otherwise, you can give them something else to color, but using the vocabulary from the story. Once this is done, we'll go outside in the playground. But प्यारे बच्चों, जब आप प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाएंगे तो आपने क्या काम करना होता है? जी हाँ, प्लेग्राउंड में जाके हम आज के जो साउंड जो उसको हम सीख रहे हैं उससे बनने वाली चीज़ों को हम ढूंढते हैं और उसके लिए हमें हर चीज़ का बारी बारी नाम लेना पड़ता है, फिर उसकी शुरू की आवाज़ को सोचना पड़ता है. सो डियर टीचर्स, देयर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स विल गेट एक्टिव द मोर यू इन्वॉल्व देम टू दिस सराउंडिंग एनवायरनमेंट. क्योंकि आज के हमारे जो ELOs थे उसमें बच्चों को एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने का भी एक टास्क था और वो तभी हो सकता है जब आप इनको इंडोर एंड आउटडोर और एट होम के लिए कुछ टास्क दें जिनमें ये अपनी ऑब्जर्वेशन को जो डेवलप कर सकें. अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़.